नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष है आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। This is the original Valmiki-Rāmāyaṇa narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by Gita Press, Gorakhpur. This is episode number 231 और सुंदरकांड का छठा सर्ग हिंदी एवं इंग्लिश में एक साथ चल रहा है। ऑलरेडी गुजराती में वाल्मीकि रामायण कंप्लीटेड है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिंदी में भी अलग से कंप्लीटेड है और इस रामायण की भी सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो ज़रूर सुने। हजारों जन्मों के पाप का नाश करके पुण्य का उदय करने वाली परम पवित्र श्री राम कथा का सुंदर कांड और छठा सर्ग। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी ने कई जगह उनको ढूंढने का प्रयास किया। उस दरमियान उन्होंने कई अच्छे राक्षस, कई अच्छी स्त्रियां, कई प्रकार की स्त्रियां उनको भी देखा। तो सीताजी कैसी हैं, उनका क्या लक्षण है, वो ऐसी कोई स्त्री उनको दिखाई नहीं दी। तो अभी वो ढूंढ ही रहे हैं, निराश हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 231 लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण छठा सर्ग। हनुमान जी का रावण तथा अन्य राक्षसों के घर में सीता जी की खोज करना। Canto सर्ग Canto 6 reaching the place of Ravana which served as an adornment to Lanka, and having looked for Sita in the adjoining mansion of Prasastha and others, Hanuman now entered the palace of Ravana. फिर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के 7 महले मकानों में यथेच्छ विचरने लगे। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुँचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए स्वर्ण में परकोटों से घिरा हुआ था। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपि कुंजर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वह महल चांदी से मढ़े हुए चित्रों, सोने से जड़े हुए दरवाज़ों और बड़ी अद्भुत दयोढियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन सुरवीर वहाँ उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहाँ शोभा पा रहे थे। सिंहों और बाघों के चमड़ों के बने हुए कवचों से रथ ढके हुए थे। उनमें हाथी दांत, सुवर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थी। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहाँ होती रहती थी।
ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब और बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वासस्थान बनाए गए थे। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्रों पशु और पक्षी वहाँ सब और भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वह सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। Wearing in the midst of a 7-stored mansion, Hanuman, who was full of riches in the form of strength and valor, who was able to assume any form he chose, and was endowed with a tremendous speed, ranged over Lanka at will and reached the palace of Ravana, the lord of the ogres, enclosed with well dazzling like the sun, nay guarded by terrible ogres, as a huge forest by lions, human, and elephant among the monkeys. Felt happy with the prospect of finding out Sita, while keenly observing the palace, which was surrounded with figures drawn in a molten silver, archways decked with ornaments of gold, beautiful concentric enclosure, and charming gateways, which was waited upon by drivers of elephants mounted on them unwearied heroes and heroes' horses, which could not be killed, and which drove chariots, which was ever frequented by marvelous chariot protected with armors of lion skin and tiger skin, bearing images of ivory, gold, and silver, and accompanied by a musical sound produced by tiny bells fastened around them, which was filled with many precious stones, embellished with most excellent seats, and provided with seats in which big chariot could be made to stand, and with spacious quarters for lodging great chariot warrior, which was crowded on all sides with well-known beasts and birds of every species, most charming and worth seeing, and numbering many thousands, nay, which was scrupulously protected by disciplined soldier guarding the boundaries, as well as by other ogres, and was thronged on every side with preeminent bells. वहाँ की रत्न स्वरूपा युवती रमणिया सदा प्रसन्न रहा करती थी। सुंदर आभूषणों की झंकारों से झंकृत राक्षस राज का वह महल समुद्र के कल कल नाद की भांति मुखरित हो रहता था। वह भवन राजोचित सामग्री से पूर्ण था। श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वहाँ भेरी और मृदंग की ध्वनि सब और फैली हुई थी। वहाँ शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उसकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहाँ होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहलपूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन
महान रत्नमय अलंकारों से अलंकृत था। उसमें हाथी, घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकवि हनुमान जी ने उसे देखा। The great Hanuman beheld the spacious palace of Ravana, the lord of the ogres, full of joyous bells, which on account of the tinkling of excellent jewel produced a sound that resembled the roaring of sea, nay, which was equipped with royal appurtenance, was rendered fragrant with the foremost varieties of sandalwood, and remained through with eminent personage as a large forest infested with lions, which was resonant with the sound of cattle drums and clay tom-toms, and was rendered noisy by the blowing of conches and a shankh, which was ever respected and kept tidy and clean by the ogres, and in which the soma juice was exerted during sacrificial performance at every change of the moon, viz. On the 8th and 4th night, 14th days of each half month, and the days of the full moon and no moon, which was incurable, link like the sea, and noisy as the sea, and was full of ornaments made of precious jewels, nay, which abounded with a precious well, and looked most charming due to the person of that mighty soul Ravana, and was crowded with elephants, horses, and chariots. देखकर कपिवर हनुमान जी ने उस भवन को लंका का आभूषण ही मान लिया। तदंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। That mighty Hanuman rocked the palace to be the very eminent of Lanka, and wandered about the abode of Ravana at that time. इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर रावण के बगीचे के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। मूविंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, belonging to the ogres, and even observing all the gardens as well as the palace, he ranged undaunted everywhere. महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहाँ से कूदकर प्रहस्त के घर में उतर गए, फिर वहाँ से उछले और महापार्श्व के महल में पहुँच गए। Leaping down into the mansion of the Prahasta, the powerful Hanuman, who was endowed with extraordinary vehemence, sprang from the house of another which belonged to the Mahapaswa. तदंतर वे महाकवि हनुमान जी मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में तथा और वहाँ से विभीषण के महल में कूद गए। The mighty Hanuman then bounded into the palace of Kumbhakarna, which resembled a cloud, and thence into that of विभीषण। इसी तरह क्रमशः ये महोदर, विरूपाक्ष, विद्युज्जीव और विद्युन्माली के घर में गए। He further leaped into the house of the Mahodara, and likewise in that of
Virupaksha, and as well the similarity into that those of Vidyut Jiva and Vidyut Mali. इसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान जी ने फिर छलांग मारी और वे वज्र दंड दृष्ट सुख तथा बुद्धिमान सारण के घरों में जा पहुंचे। The great Hanuman, who was possessed of extraordinary might, speed, similarly bounded into the house of Vajra Dranshta, as also into the house of Sukha and that the wise Sarana. इसके बाद वे वानर युद्धपति कपिश्रेष्ठ इंद्रजीत के घर में गए और वहाँ से जम्बुमाली तथा सुमाली के घरों में पहुँच गए। Hanuman, the commander of the monkey force, likewise possessed on the place of Indrajit, Ravana's eldest son, and that dwell among the monkeys, went into the dwelling of Jambumali and Sumali. तदंतर वे महाकपि उछलते कूदते हुए रश्मि केतु सूर्य सूत्र और वज्रकाय के महल में आ पहुँचे। The great Hanuman also leaped into the absolute for Ram Rashmi Ketu and likewise into that of the Surya Shastra and similarly into that of the Vajrakai. फिर क्रमशः वे कपिवर पवन कुमार धूम्राक्ष संपाति विद्युत स्वरूप भीम धन विधन सुकनाभ चक्र सठ कपट हस्वकर्ण दृष्ट लोमस युद्धोन्मत ध्वनिज ग्रीव विद्युज्जीवा द्विजीव हस्ति मुख कराल पिशाच और सोणिताक्ष आदि के महलों में गए। इस प्रकार क्रमशः कूदते कूदते वह महायशस्वी पवनपुत्र हनुमान उन बहुमूल्य भवनों में पधारे। वहाँ उन महर्षियों ने उस समृद्धशालिनी राक्षसों की समृद्धि देखी। The son of the wind god Hanuman then visited the habitations of the Dhumraksha, Sampati, Vidyut Rupa, Bhima, Ghana and Vigalana, Sukha, Nabha, Sukhanab, Chakra, Satha, and Kapata, Haraswakarna, Damastra, and that Ogre, Lomas, Yudhona Matta, Dvajagagriva, Sadi, another Vidyujjiva and Dvijjiva, and likewise those of Hastimukha, Karala, Pisaka, and also of the Sonitaks, leaping one another into the various minister of great value. Inside that mighty and highly illustrious Hanuman, son of the wind god, marked the affluence of those wealthy ogres. तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांघ कर राक्षस राज रावण के महल पर आ गए।
passing clearly beyond the residence of all of that forest, principal ogre on every side, Hanuman endowed with riches in the form of virility, once more reached the palace of Ravana, the ruler of the gods, ogres. वहाँ विचरते हुए उन वानर शिरोमणि कपिश्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली उसके पलंग की रक्षा करने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी विकराल थी. While wandering about the palace of Ravana, Hanuman, a tiger among these monkey, beheld a number of ogresses with ghastly eyes guarding the bed chambers of Ravana. साथ ही उन्होंने उस राक्षस राज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे, जिनके हाथों में शूल, मुद्दर, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे. He also saw in the abode of that lord of the ogres various troops of ogres bearing darts and clubs in their hands and carrying javelins and lunches. उनके सिवा वहाँ बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे. इतना ही नहीं, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे. He further observed gigantic ogres which uplifted weapons of every description and also found tethered in the stables red as well as white steeds of high speed. इस प्रकार श्री साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने के वाले थे. वे सब के सब गज शिक्षा में सुशोभित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी तथा शत्रु सेना का संहार करने में समर्थ थे. वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे थे. उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी. वे सम्रांगण में शत्रुओं के विजय लिए दुर्जय थे. हनुमान जी ने रावण के भवन में उन सबको देखा. राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने राक्षस सहस्त्रों ऐसी सेनाएं देखी, जो जाम्बू नद के आभूषणों से विभूषित थी. उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातः काल के सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रही थी. He observed in that palace elephants of superior breeds, vanquillas sword of hostile tusk and destroys of hostile forces, which was endowed with grace and had been trained in the method of warfare carried on with elephants which were equal in combat to a rival. The elephant who carries on its beak Indra, its back Indra, the ruler of the paradise, and discharge fluid from their temple like raining clouds and mountains, sending forth reels and springs, etc., nay, whose trumpeting resembling the thundering of clouds, and which were had to assail for the foes. Hanuman also beheld in the abode of Ravana, the ruler of the ogres, thousands of
garrisons adorned with jewel of pure gold found in the bed of the Jammu river, nay, fully protected with an armors of gold and therefore shining brightly like the morning sun. पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्र लता गृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विशाल गृह और दिन में उपयोग में आने वाले विशाल भवन भी देखे। उन्होंने वह महल मंद्राचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थानों से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त, अनंत रत्नों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुष निधि रक्षा के उपयुक्त कर्मांगों का अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात भूतनाथ महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान झगमगा रहा था। वानर युद्धपति हनुमान जी ने वहाँ के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्ज्वल तथा जांबुनत स्वर्ण से बनाए हुए ही देखे। उसमें मधु आसव के गिरने से वहाँ की भूमि गीली हो रही थी। मणिमय पत्रों से भरा हुआ वह सुविस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नुपुरों की झंकार, करधनियों की खनखनाहट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि तथा अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वह भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं थी, सैकड़ों रमणीय रत्न वहाँ व्याप्त था। उसकी डढ़ैयों बहुत बड़ी बड़ी थी। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। Therefore said Hanuman, son of the wind god, further observe the palace in the palace of Ravana, the lord of the ogres, palanquins of various shapes, wonder beware, and buildings with picture galleries duly provided in them, as also other pleasure house which with wooden mountains, a lovely house for sexual delights, and a diurnal pleasure house as well. He found the excellent palace having an appearance like that of the Mount Mahendra and crowded with the pens for peacocks, thickly set with flagstaffs and enriched with heaps of endless precious stones and collection of the treasure on all sides. Sacrifice forming part of the ritual were performed there for the preservation of those treasure by fearless and resolved persist, so that the palace looked like the mansion of the Kuber, the ruler of the riches, due to the rays of its precious stone and the splendor of Ravana. The aforesaid palace shone brightly like that the sun, encircled by its miry rays. Hanuman, a leader of monkey herds, beheld in the palace couches and seats and glittering vessels all made of gold. Hanuman penetrated deep into the huge, beautiful and commodious edifice, whose floor remained wet with vinays and liquors split now and then, which was full of vessels made of gems and looked like the mansion of Kuber, nay, which was resonant with the tinkling anklets, the jingling of
griddles, the sound of the clapping and the crash of wooden tom-toms, and ever deeper sounding musical instrument of the precious, which consisted of multitudes of by mansion and was crowded with hundreds of excellent women, and also encircled by a number of spacious concentric enclosure. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे षष्ठ सर्ग। Thus ends Canto 6 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pate. Har Har Mahadev Har. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siya Ram, Jaya Jaya Ram. सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thanks this channel. जय श्री राम। जय महाराज।